हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्स हैपनिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जुलाई सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इन विच सिटी एनटीपीसी कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? रामागुंडम, तेलंगाना। हु हैज बिकेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? Yair Lapid. Who has been appointed as the brand ambassador of FanCode? Ravi Shastri. What is gross GST revenue collection for June 2022? 144,616 crore. Which company recognized Microsoft Partner of the Year Award 2022? HCL Technology. इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, और ये दिन हर साल 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022? गांधीनगर, और थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023? लंदन, और मुंबई की रैंक है 103 एज इंडियाज हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटी। हु हैज वॉन फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल? Sini Shetty. Who has won British F1 Grand Prix 2022? कार्लोस सेंच, और ये फरारी के ड्राइवर है। Which state UT गवर्नमेंट लॉन्च नारी को नमन स्कीम? हिमाचल प्रदेश। Which bank has been authorized to issue an e-cash electoral bonds? State Bank of India. America's Independence Day, 4th July. In which city Prime Minister Narendra Modi has virtually inaugurated Bosch, India's first smart campus? Bengaluru. Who has been elected as Speaker of Maharashtra Legislative Assembly? Rahul Narvekar. Who has been appointed as brand ambassador of Pokerbaji? Shahid Kapoor. Who has organized Suraksha Manthan 2022? Indian Army. Who has been awarded the Ayurveda Ratan Award by the UK Parliament? Tanuja Nesari. Who has won the 2022 Malaysia Open title? Victor Axel Sen. Which electricity company has developed EV Mitra mobile app to provide information about EV charging station in Bengaluru? The Bengaluru Electricity Company. Which enterprises has been recognized as the most preferred workplace of 2022? NTPC. Which state has been recognized as the best performer state in Startup Ranking 2021? गुजरात। वर्ल्ड जूनोज डे, और ये दिन हर साल 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। Who has been appointed as new CEO and MD of Aviva India? Asit Rath.
Which state top in ranking for implementation of National Food Security Act 2022? Odisha. In which country G20 foreign ministers meeting will be held? इंडोनेशिया. और इंडोनेशिया में बाली में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी. Which country declared equal pay for male and female cricketers? New Zealand. Who has won the Field Medal 2022 award? Ukrainian mathematician Mariana Vyazovska. India has signed a MOU with which country on high impact community development project in the country? Armenia. What is full form of TIHAN? Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation. Who has been nominated for the Rajya Sabha by central government? PT Usha, Illai Raja, Virender Hegde, KV Vijender Prasad. Who has inaugurated India's first ever Animal Health Summit? परसोत्तम रूपाला. और ये मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के. वर्ल्ड चॉकलेट डे. ये दिन हर साल 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. Which state UT will introduce India's first Right to Health Bill 2022? Rajasthan. Who has been appointed as new force commander of United Nations mission in South Sudan? मोहन सुब्रमण्यम. और ये LG है इंडियन आर्मी के. Who has been appointed as a president of Association of Indian Universities? Suranjan Das. Who has been appointed as MD and CEO of SBI General Insurance? Paritosh Tripathi. Who has taken charge as new collector of Jaisalmer? Tina Dabi. Who has become the first woman to feature on IMF wall of former chief economist? Geeta Gopinath. P. Gopinathan Nair has passed away. Who was he? फ्रीडम फाइटर. वर्ल्ड किस्वाहिली डे. और ये दिन हर साल 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. शिंजो आबे पास्ड अवे. हु वॉज ही? फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर. विच स्टेट UT विल होस्ट इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023? Delhi. Who has been elected as President of Confederation of Indian Industry? R. Dinesh. Which state UT has launched the Mission Kushal Karmi program? New Delhi. Who has been appointed as India's new G20 Sherpa? Amitabh Kant. Which state became the first state in India to have 13 expressways? Uttar Pradesh. Who has been appointed as Deputy Election Commissioner? R.K. Gupta. चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा.
कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।